आंसर कोटा इंपोर्टेंट नुह बिलीव मी प्रिलिम्स रे जदि तुम अप्रोच करेक्ट अच्छी आंसर भी करेक्ट हम ओके आ जदि तुम अप्रोच वंस भूल हो गला 99% चांस अच्छी तुम भूल कर आंसर जदि बा ठीक कर टाइम बहुत कंज्यूम हम से सो फोकस ऑन राइट अप्रोच लेट अस अंडरस्टैंड गोटे गोटे क्वेश्चन डिस्कशन करिबा फर्स्ट जिनस देख आ गोटे मु एजेंडा टिके सेट कर दोची आज रो डिस्कशन रो ऑब्जेक्टिव बिल्कुल या नुह जे व्हाट इज द करेक्ट आंसर तमे गोटे जिनस माइंड रे रखि दियो बिकॉज करेक्ट आंसर कोन सेटा तमर एप्लीकेशन रे पाई जिवो से जो मॉडल तार एक्सप्लेनेशन आई थिंक अपलोड हो सारी प्रोबेबली तुम सेटा को देखि कि निजे भी पाई परियो आमर एटी कोन ऑब्जेक्टिव होवा दरकार फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज रिवीजन टेस्ट डिस्कशन माध्यम रे आमे गुडाए चैप्टर एट ए टाइम आमे रिवीजन कर दोचे ओके फर्स्ट सेकंड ऑब्जेक्टिव ए हवा दरकार कि क्वेश्चन जति आसुची आम माइंड टाको आमे केमिति ट्रेनिंग दबा सो दैट ए टाइप रो क्वेश्चन गुडा को डील केमिति करा जिवो सेही समय रे बिकॉज जेतल तमे प्रीलिम्स रे बस बहुत प्रेशर थाइ आउ आउ एटा गोटे सब्जेक्ट नुह मल्टीपल सब्जेक्ट ऊपर तमे डील करिवो सो हुए तो जल्दबाजी रे किमा अंडर द प्रेशर भूल हो जाई पारे सो आमर सोल ऑब्जेक्टिव या हवा दरकार कि आमे केमिति मिनिमाइज करबा नेगेटिव मार्किंग को परफेक्ट तो हेई परिबनी मु ए कहून जे नाही 26 टा जदी पॉलिटी रे आसी तमे 26 आउट ऑफ 26 सब गुडा करेक्ट करिक आसीबो बट जेतिकी भी आमे करिबा ठीक करिक आसीबा टारगेट शेयर होय दरकार नाउ डिस्कशन एजेंडा मु क्लियर कर देछि कि नॉट टू रीचिंग मियरली द आंसर की प्रोबेबली तुमे भी जानि थिबो बट आमर मेन ऑब्जेक्टिव रहबा दरकार कि सराउंडिंग रे केमिति कोन आमे फॉलो करिबा ताकू डिस्कस करिबा आउ राइट अप्रोच कोन रहबा दरकार स्पेशली पॉलिटी सब्जेक्ट को लेके फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स बहुत ओडिया मीडियम जो माने अच्छो सेटा साइड रे भी लिखा है छी ओके जो माने ऑनलाइन देखुछो आई होप स्क्रीन समस्त को विजिबल ओके फर्स्ट क्वेश्चन देछि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेस्पेक्ट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एनसाइन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ओके मु गोटे दिटा क्वेश्चन टिके स्लो रे जिबी अप्रोच टा बुझाई देबी देन आमे टिके स्पीड रे जिबा मे नॉट बी पॉसिबल कि 100 टा क्वेश्चन आमे डिस्कशन करबा बट जेतिकी करबा भलो रे करबा सो दैट तुम मानको बाकी गुडा क्वेश्चन गुडा को अप्रोच गुडा सिखि जिवो स्टूडेंट देखो सबले मन रखो जेतेबेले भी तुम क्वेश्चन स्टार्ट करूछो माय सजेशन वुड बी कि से कोन एक्जेक्टली पचारछि ता ऊपर फोकस करो बिकॉज मेजॉरिटी क्वेश्चन तुम एया ही पारिबो जे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ये हमर प्रायोरिटी नुह हम प्रायोरिटी कोन एठी दीटा जिंस पचारछि विथ रेस्पेक्ट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन माने हम माइंड कोठी की जीवा दरकार कोठी की जीवा संग से माइंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन माने हैं मो माइंड जीवा फंडामेंटल राइट तापर कोठी की जीवा आर्टिकल 25 बस 25 टू 28 अब स्पेसिफिकली 25 आउ 26 स्पेसिफिक जदि हम कहबा करेक्ट बुझी गलो माने स्टेटमेंट पढिया पूर्वरु तुम माइंड फ्रेम हो जावा दरकार कि ओके ठीक अच्छे क्वेश्चन पचार फ्रीडम ऑफ रिलीजन माने फंडामेंटल राइट 25 26 27 28 आ स्पेसिफिकली 25 और 26 मो माइंड रे सेट हेगला बर्तमान स्टेटमेंट कोन देला इट इंक्लूड्स द फ्रीडम टू नॉट फॉलो एनी रिलीजन इट बार्स ऑल रिलीजियस कन्वर्जन्स इट इज नॉट एप्लीकेबल टू फॉरेन नेशनल्स बुझिया पे ट्राई करो आमे कॉन्सेप्ट पढ़ीचे कि आर्टिकल 25 कौन कहूची आर्टिकल 25 इज स्पीकिंग अबाउट फ्रीडम टू पर्सनल रिलीजन माने जने इंडिविजुअल मे बी अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री और मे बी अ फॉरेन नेशनल्स कैन हैव और adhere टू रिलीजन और नॉट adhere टू एनी रिलीजन अर्थ जने जदि कहूची कि नाई मु कोनोसी रिलीजन रखिया पे चाहूनी दैट इज आल्सो फ्रीडम ऑफ रिलीजन सो फ्रीडम ऑफ रिलीजन नॉट ओनली merely to have the religion but also not to have any religion so it includes the freedom to not follow any religion is it a correct statement yes or no
तुम मैंने जो स्टेटमेंट पढ़ुछ तुमको टिके सरप्राइजिंग लगुच कहीं बिकॉज फ्रीडम ऑफ रिलीजन साधारणतः आम कौन भावु कि आई हैव द फ्रीडम टू चूज एनी रिलीजन द वे आई वांट बट स्टेटमेंट से बुले की पचारची you have the freedom not to choose any religion the way you don't want? Yes. So ये ला correct statement. It bars all religious conversions. Is it correct? कहीं की नुह? Now here is the discussion. सबले मन रख क्वेश्चन जो अप्रोच करूछ डिस्कशन करूछ केवल जे तुम आंसर की को देखिले हबनी एटा जदी भूल हैला काहे की भूल हैला सेटा जानिबा निहाती दरकार. वंस तुम एई वे रे जदी एनालिसिस करिवो मु ग्यारंटी देखि कहूची कि तुमर आ ये कॉन्सेप्ट रे जीवन सारा केबे भी तुमरा डाउट रहइबनी. पढ़ा भल रे कि इट बार्स ऑल रिलीजियस कन्वर्जन्स. इज इट करेक्ट? भूल कोठी हैला ताले एटी? इट बार्स ऑल रिलीजियस कन्वर्जन्स. रिलीजियस कन्वर्जन माने बुझी पाछो कि गोटे धर्म रु आ गोटे धर्म को कन्वर्ट करिवा. कौन ये मना अच्छी तुमको बुझा पड़ो क्वेश्चन कहीं पचारा स्टेटमेंट कहीं सब विषय गोटे रीजन अच्छी. ट्राई टू अंडरस्टैंड. आर्टिकल 25 says freedom to practice आउ वो दीटा टर्म अच्छी कौन परफेक्ट प्रैक्टिस एंड प्रोपागेट. प्रैक्टिस अर्थ आम निजे जहाँ आम प्रैक्टिस करवा जी जो धर्म बिलोंग करुँच. प्रोपागेट अर्थ प्रचार प्रसार करवा. एबे मुझे फंडामेंटल राइट क्लासेस भी नहीं से गोटे मुझे कही वन ऑफ द कंट्रोवर्सी रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज फोर्सफुल कन्वर्जन्स. सो तुम्हें एबे बुझी पारछ कि क्वेश्चन डायरेक्टली कंटेंट रो न पचारी से माने इश्यूज को पचारुचंती. सो ये जो स्टेटमेंट आसिला कि रिलीजियस कन्वर्सन स्टेटमेंट एथि आसिला बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स यू राइट टू कन्वर्ट बट नॉट फोर्सफुल कन्वर्सन. सो जदि एठी टर्म हेता इट बार्स ऑल रिलीजन फॉर फोर्सफुल कन्वर्जन्स ताले एटा ठीक हेता केना हमर संविधान फोर्सफुल कन्वर्जन को केबे भी अलाउ करू नाही. किंतु नॉर्मल जदि गोटे किए जदि धर्म को कन्वर्ट होवा पे चाहूची मोस्ट वेलकम नो प्रॉब्लम एथे. ओके सो स्टेटमेंट भूल होना ठीक हबो. इट बार्स ऑल रिलीजन नो तो ये भूल है स्टेटमेंट. ओके नाउ थर्ड पॉइंट देखो इट इज नॉट एप्लीकेबल टू फॉरेन नेशनल्स. इट इज नॉट एप्लीकेबल टू फॉरेन नेशनल. इज इट करेक्ट? इज इट करेक्ट? नो it is applicable to Indian citizens as well as foreign national. So a statement भी भूल statement. Okay तो आंसर कोटा हबो A1 only. Are you clear? Yes or no? डाउट अछि पचार दियो. क्लियर हैला समस्त कर. ओके नाउ स्टूडेंट्स मु जतले डिस्कशन करिवि मु तुमको तीनटा मेथड तुमको कहबी. प्रथम जो मेथड मु एबे टिके एक्सप्लेन करली सेtre मु कोन कहली स्टेटमेंट पढिली गोटे गोटे स्टेटमेंट को मु एक्सप्लेन करली ताको एनालिसिस करली एंड सेठु हमें कौन जानले वी कम टू अ कंक्लूजन वेदर द स्टेटमेंट इज करेक्ट और रॉन्ग. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि अलगा कौन मेथड हे परिबो. लेट अस अंडरस्टैंड अलगा कौन मेथड हे परिबो. मेथड नंबर 2 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट सो एंड सो पचारला. ओके तुम्हें आमर जतला आखि नजर पड़े आमे तळ ऊपर पढू ना ऊपर तळ पढू साधारणतः ऊपर तल तो पढ़ी पढ़ी आसला. फर्स्ट स्टेटमेंट मो नजर कौन आसला इट इंक्लूड्स द फ्रीडम टू नॉट फॉलो एनी रिलीजन. टू नॉट फॉलो एनी रिलीजन. ओके अर्थ मु जानली कि स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट. एटा करेक्ट स्टेटमेंट. नाउ देन ए मेथड रे कोन करिवो तुमे ए मेथड को कहो हमें थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन मेथड. कोन कहो हमें थ्योरी ऑफ किमा एलिमिनेशन टेक्निक बोली भी कहि परिवो. एलिमिनेशन टेक्निक. सो स्टेटमेंट नंबर 1 होची ठीक. बाकी जो दीटा स्टेटमेंट न पढ़ी कि मु डायरेक्टली पळे आसीबी ऑप्शंस को. बट ऑप्शंस को आसिया पूर्व मते एटा सिलेक्ट करिया पड़िबो. से मते करेक्ट पचारछि ना इनकरेक्ट पचारछि. वेरी केयरफुल. एठी मैक्सिमम पिला भूल कर दियंते. ओके मु जानिली कि स्टेटमेंट नंबर 1 ठीक अछि मते पचारछि करेक्ट अर्थ एक नंबर ऑप्शन जोटी अछि सेटा करेक्ट बाकी सब एलिमिनेट कर देबी.
एक नंबर ऑप्शन कोठी नाही एठी नाही ये एलिमिनेट हे गेला एक नंबर ऑप्शन कोठी नाही डी रे नाही ये भी एलिमिनेट हे गेला इजी ता माने मो पाखरे दीटा ऑप्शन बंचिला ए आउ सी फर्दर मोर ब्रेन या चलिया दरकार कि मु स्टेटमेंट नंबर 2 भी पढ़िया दरकार नहीं सी भूल कि ठीक मु जानी नहीं मते पढ़िया भी दरकार नहीं बिकॉज मोर आंसर केवल 1 आउ 3 ऊपर डिपेंड करे मु डायरेक्टली आसी 3 नंबर स्टेटमेंट रे इट इज नॉट एप्लीकेबल टू फॉरेन नेशनल्स एटा भूल स्टेटमेंट तो 3 नंबर भी तुमर कटि गला मु मेरिट आउ डिमेरिट कहूची ए दीटा मेथड रो फर्स्ट मेथड रो मेरिट होची एक्यूरेसी बहुत भलो हबो सेकंड मेथड रो मेरिट होची टाइम सेव हबो फर्स्ट मेथड रो डिमेरिट होची टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस थर्ड सेकंड मेथड रो डिमेरिट होची हेई पारे नेगेटिव कर दबो जल्दबाजी रे हड़बड़ी रे हेई पारे बट what is the best way is the second method best way is second method now how do we prepare for the second method रे ता माइंड जो फंक्शन करिवो ना एट ए टाइम दि तीनटा जिंस फंक्शन करूची प्रथम मेथड रे हम कोन करथले गोटे गोटे पढुथले माने हम माइंड गोटे जिंस को फोकस कला देन नेक्स्ट को आसला देन नेक्स्ट को आसला बट सेकंड मेथड रे हम दि तीनटा एका साथ फोकस करले फर्स्ट स्टेटमेंट पढ देले देन स्टेटमेंट 1 ठीक हे गेला देन मो माइंड सांगे आसला करेक्ट इनकरेक्ट तापर मु काटी देली 3 डायरेक्ट 3 आसला सेकंड को मु काटी देली दि तीनटा जिंस एका साथ माइंड रे चले सो सेकंड ऑप्शन पाई प्रैक्टिस बहुत दरकार अब फर्स्ट मेथड पाई रिवीजन दरकार ट्रिक बुझिला फर्स्ट मेथड पाई रिवीजन बारंबार करिया पड़िबो करेक्ट होबो किंतु सेकंड मेथड पाई रिवीजन तमे जते करिथाउ ना काहे की प्रैक्टिस जदी तमे न करिथिबो क्वेश्चन जदी सॉल्व न करिथिबो तमे एठी भूल कर दबो बिकॉज़ मल्टीपल जो माइंड को खर्च करिवार से जो ट्रेनिंग तुमको दबा पड़िबो क्लियर ओके ऑनलाइन रे समस्त क्लियर okay now next question jiba under article 360 of the constitution the power to proclaim financial emergency is vested under what बहुत सिंपल क्वेश्चन ओके आमे इमरजेंसी आसिला माने तुम माइंड रे गोटे ही आंसर हबो जोटा कि प्रेसिडेंट ये होजी करेक्ट आंसर बट आमे एतिक रे रहिबानी आमे या ऊपर आउ टिके अधिक जानिबा नाउ स्टूडेंट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन मु तुमको कहितली कि बैक कैलकुलेशन 360 - 4 356 एंड 352 नेशनल इमरजेंसी 356 सम तुम स्टेट इमरजेंसी 360 इज फाइनेंशियल इमरजेंसी एठी जो फाइनेंशियल इमरजेंसी कहिची या जगह रे कोनोसी भी इमरजेंसी जदी से रखि थांदा ताले भी प्रेसिडेंट वुड बी द राइट आंसर नाउ लेट अस अंडरस्टैंड जेहेतु एठी कहिची कि द पावर टू प्रोक्लेम ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर इज सर्टेन कंट्रोवर्सी रिलेटेड टू इट किसीटा कंट्रोवर्सी अछि तुमको जानिया पड़ियो द पावर टू प्रोक्लेम ओके तो स्टूडेंट्स तुम जानिचो जदिओ फाइनेंशियल इमरजेंसी हम भारत रे लागू हेइनी बट देयर वाज अ टाइम इमरजेंसी लागू हेइतिला को इमरजेंसी नेशनल को समय लागू हेइतिला 1975 इंदिरा गांधी से समय प्राइम मिनिस्टर थिले लागू हेइतिला ट्राई टू अंडरस्टैंड सर्टेन कंट्रोवर्सी रिलेटेड टू इट 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे 1975 से समय रे इंदिरा गांधी चाहूथिले कि पावर तंको पाखरे रहू सो 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे जेतोले कॉन्स्टिट्यूशन को मॉडिफिकेशन करा गला सेही समय रे कुहा गला कि इमरजेंसी रो जो ग्राउंड कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ माने प्राइम मिनिस्टर जेतोले इमरजेंसी लागू करिवे इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ तार ग्राउंड कैन नॉट बी चैलेंज्ड यार अर्थ तुम या ही बुझो कि मु गोटे काम करली तुमे मते क्वेश्चन पचारि परिबोनी ठीक सीक्वेंस बुझिया पे ट्राई करो 38 हला परे 42nd अमेंडमेंट हला तुमे समस्त जानिचो कि 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1975
6 which is also known as mini constitution. Why? लक्ष्मीकांत लिखा है but कहीं because majority part of the constitutions were amended at a time only in one constitutional amendment जोटा होची 42nd मेजोरिटी माने प्रथमे कोन करा गला emergency रो जो origin टा को ताको कोन करा गला कंट्रोल करा गला it cannot be asked in a court of law देन आको इंप्लीमेंट करा गला पावर को गैदर करिवा पय 42nd रे जो समय रे इंदिरा गांधी को गवर्नमेंट भांगिला नेक्स्ट किया आसले मोरारजी देसाई आसले से को अमेंडमेंट आनिथिले को यस 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ईयर को 1978 रे इट बिकम चैलेंजिंग एई अमेंडमेंट रे कोन करा गला प्रथमे तो 42nd अमेंडमेंट रो जो चेंजेस गोडा करा गला मैक्सिमम चेंजेस को रिवर्स करा गला किछि गोटा स्टे हैला बट मैक्सिमम चेंजेस को रिवर्स कर दिया गला सेकंड जिंस इट आल्सो चैलेंज द 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ओके 38 को भी चैलेंज करा गला एठी जो अमेंडमेंट करा गला एठी कोहा गला कि प्राइम मिनिस्टर एकुटिया डिसीजन नहीं परिबे ने नेशनल इमरजेंसी को अप्लाई करिया पाए रिटन अप्रूवल दरकार आर यू अंडरस्टैंडिंग इज इट क्लियर और नॉट यस बुझी पारछो तुमको क्वेश्चन बहुत सिंपल लागिला प्रोबेबली तमे कोन करथांदो तमे तो जानिछो हां सर एते इजी क्वेश्चन प्रेसिडेंट किंतु जदि भाबो काली जदि गोटे क्वेश्चन आसुची या ऊपरे तमे आराम से आंसर देई परिबो जदि ए क्वेश्चन भी डिफिकल्ट हे परिबो याको मॉडिफाई करा जाई परिबो सो सेति पई तुमको टिके और डिटेल एनालिसिस करिया पे मु सब बोले एनकरेज करिवे थर्ड क्वेश्चन देखो पढ़ो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द सिमिलरिटीज बिटवीन इंडियन पार्लियामेंटरी सिस्टम एंड ब्रिटिश पार्लियामेंटरी सिस्टम सिमिलरिटीज पचाची ओके ऑनलाइन रे समझते इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू ओके बहुत बढ़िया ओके नाउ स्टूडेंट्स सी पचाची सिमिलरिटीज पचाची भारतीय एवं ब्रिटिश सिस्टम रे जानिबा सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट मेजॉरिटी पार्टी रूल कौन पचार सिलेक्ट द करेक्ट आंसर सब बेले मन रख माइंड रे रखिबो माय डियर ऑल ऑफ यू एमिति न हो जे तमे सब पढ़ी पढ़ी आस्तिबो तमे अज्यूम करि दिबो जे एटा करेक्ट पचार देखला बेलकु इनकरेक्ट पचारतिबो सेठी तमे फसी जिवो भूल कर दबो सब बेले मन रखिबो ऑप्शंस आसिया पूर्वरु थरे टिके वेरीफाई करिवो जे एटा करेक्ट ना इनकरेक्ट पचार कहीं साधारणतः इनकरेक्ट हेले हमर माइंड एते फास्ट प्रोसेस करि पारेनी करेक्ट रे जेमति फास्ट प्रोसेस करिवो इनकरेक्ट रे एते फास्ट प्रोसेस करि पारेनी छोट छोट जिंस बहुत मायने रखे प्रीलिम्स तमरो केते क्वालिफाई करिवो कोन करिवो छोट छोट जिंस बहुत मायने रखे केवल जे सिलेबस टा सार दबा रिवीजन कर दबा सेटा सफिशिएंट नुह गोटे प्रीलिम्स क्वालिफाई करिया पे ए टेक्निक गुडा निहाती दरकार तुम मानब भाई तो स्टूडेंट्स एबे जानिबा टिके कि सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट मते वर्तमान कहो कि कौन भारत रे सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट इज सिमिलर लाइक ब्रिटिश यस अच्छा ए कांसेप्ट हम कोठी पढिथिले आमे मने पकाउ टिके जेतबेले क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढिथिले आमे जानिथिले कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वन टाइप इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अनदर इज अनरिटन टाइप कॉन्स्टिट्यूशन स्टूडेंट्स हमें समस्त जानिचे कि इंडिया is an example of written constitution and UK British is an example of unwritten constitution okay now written constitution of any country it has only one superiority that is the constitution itself sethipai it is written constitution that means in all the written constitution or the countries which are adopting written constitutions सेठी supreme किए संविधान संविधान ऊपर को किए भी नहीं executive has to follow the constitution parliament has to follow the constitution so is the case for judiciary also needs to follow the constitution so but in Britain it is unwritten constitution because parliament is supreme parliament जेतोले चाहिबो सिए rules को change करी पारिबो that is also the reason why it is flexible constitution but in written constitution ने तमे तीनटा टाइप देखिबो flexible भी देखिबो blend of flexibility rigidity जोटा कि भारत और rigid constitution like US but
रिटन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज कंप्लीटली फ्लेक्सिबल जेतोला चाहिबो जे चाहिबो से चेंज कर दी परिबो व्हाई बिकॉज़ पार्लियामेंट इज सुप्रीम इन नेचर सो एठु हमें कोन जानिले कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट द सिमिलरिटीज अर्थ ये हला भूल स्टेटमेंट गला आमे मेथड नंबर 2 रे टिके सॉल्व करिबा ओके सो कैन इट बी द करेक्ट आंसर नो त माने एक नंबर जोठी अछि मु ताको एलिमिनेट कर देबी यस और नो करिबा एक नंबर मु एलिमिनेट करली बी भी एलिमिनेट करली सी रे नाही एक नंबर नॉन तो हे ही पारिबनी बिकॉज़ नॉन रो अर्थ कोनोसी भी नुह रो अर्थ केमिति हबो ओके नाउ बट एबे कंफ्यूजन होची 3 और डी 3 एंड डी भितरे कंफ्यूजन यस और नो ओके एबे वर्तमान कोन करबा स्टूडेंट्स नॉन को प्रूव करिया पे मते 2 नंबर भी स्टेटमेंट पढिया को पड़िबो 3 नंबर स्टेटमेंट को भी पढिया को पड़िबो मु काई एते परिश्रम करबी मु तो जानी छी मु जदी 3 नंबर स्टेटमेंट पढिबी जदी सेटा ठीक किबा भूल अछि सेथरु ही डिसाइड हे जिवो जे नॉन टा हबो कि नॉन न हबो 3 नंबर स्टेटमेंट डायरेक्ट पढिबा मेजॉरिटी पार्टी रूल पार्लियामेंटरी सिस्टम रे मेजॉरिटी पार्टी रूल यस और नो इज इट अ फीचर और नॉट यस पार्लियामेंटरी सिस्टम रो अर्थ होची सेया कि जो पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी रहिबे जो मानको पाखरे मेंबर्स अधिक अछि मोर देन 50% सीए ही कोन करिवो गवर्नमेंट फॉर्मेशन करिवो ब्रिटेन रे भी सेया जिंस भारत रे भी सेया जिंस तो मु कोन जानिली कि आंसर नंबर 3 होची करेक्ट मते 2 नंबर स्टेटमेंट पढिया ही दरकार नै सो ऑटोमेटिकली आई कम टू द कंक्लूजन एंड स्टेटमेंट नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर जदि तुम स्टेटमेंट नंबर 2 भी जदि पढुचो इफ आई go to the method number 1 elected head of the state is it correct ठीक है याको एनालिसिस कलो आमर हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड यस आर हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड who is the head of the state president is the head of the state okay nominal head of the state kuha but head of the state according to article 53 of the constitution that the president shall be the head of the executive but what about the britain monarchy system सेठी हेड जी अछंती प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड बट जे मोनार्की अछंती सी नॉट इट इज हेरिडिटरी इट इज नॉट इलेक्टेड सो तुम जति मेथड नंबर 1 हिसाब रे भी जिवो देन आल्सो यू विल कम टू अ कंक्लूजन दैट इट इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट बट मु सब बेले तुमको रेकमेंड करबी तुम माइंड को एतिकी फास्ट तुम ट्रेनिंग दियो एतिकी तुम शार्प बनाओ सो दैट तुम मेथड नंबर 2 रे ही सब गुडा सॉल्व करो आ मन रखो मेथड नंबर 2 सब बेले एप्लीकेबल हेई परिबोनी केवल एई फॉर्मेट रे क्वेश्चन रे ही मेथड नंबर 2 एप्लीकेबल हेई परिबो प्लीज रिमेंबर देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस गोटे हला प्रथम जो तुमको देखैली दिस इज वन लाइनर क्वेश्चन एठी तुम मेथड एलिमिनेशन टेक्निक अप्लाई करि परिबो नाही आ गोटे टाइप होची एई क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड एठी अप्लाई करि परिबो बट स्टेटमेंट बेस्ड रो आ गोटे भी टाइप होची जेमति कि से जदी पचारिबो select the correct answers एठी जदी याकू रिप्लेस करके से पचाउचे हाउ मेनी ऑफ द अबव आंसर्स आर करेक्ट और रॉन्ग सेठी तमे एलिमिनेशन टेक्निक अप्लाई करि परिबो हाउ मेनी पचार दला नॉट व्हिच वन हाउ मेनी रो अर्थ केतेटा एटू ठीक किमा केतेटा एटू भूल या अर्थ तुमको सब गुडा ऑप्शंस पढिया पड़िबो सो तुमको बेसिकली मु एया कहूनी जे केवल यू स्टिक टू द मेथड नंबर 2 जो मोमेंट रे देखिलो ए क्वेश्चन पढिची हाउ मेनी नाही इमीडिएटली तुम माइंड रे फोर्स होवा दरकार कि मु मेथड 2 रे अप्लाई करिबी जो समय रे वन लाइनर आसी गला कि स्टेटमेंट जो हाउ मेनी टाइप रे पचारला देन बिल्कुल भी तुम टाइम वेस्ट करिवनी एलिमिनेशन टेक्निक लगेई की बिकॉज़ सॉल्व हबोनी तुम एलिमिनेशन टेक्निक रे कांसेप्ट क्लियर दरकार से समय रे ओके नाउ लेट्स गो टू अनदर इंडियन फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट is described as a federation with centralized tendency okay which among the following provisions of the constitution supports this tendency select the correct answer अच्छा चलो से कौन पचारची क्वेश्चन टा बुझिया पे ट्राई करो क्वेश्चन कौन पचारची ऑनलाइन जो माने अछो आर यू अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ यू ओके बहुत बढ़िया यस क्वेश्चन कौन पचारची क्वेश्चन होची तुम्हारा फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रो फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वन ऑफ द फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट फेडरल कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ओके नाउ फेडरल कैरेक्टर तो मोर लक्ष्मीकांत रे लिखा है कि हमरो भारत इज नोन एज क्वासी फेडरल ओके फेडरल रो अर्थ तुम समस्त जानिछ पुनी रिपीट कर दो फेडरल रो अर्थ एया कि द पावर्स रेस्पोंसिबिलिटीज बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट
and the state government or union government or the state government is divided. Okay, and it is expected that they shall not intervene with each other. It is expected. That is the meaning, simple meaning of federalism. Now एटी कौन पचारची कि भारत और इंडियन फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म पचारची. फेडरलिज्म तो बहुत अच्छी, विभिन्न प्रकार कंट्री रे विभिन्न प्रकार फेडरलिज्म, बट भारत रो जो फेडरलिज्म सिस्टम कौन? फेडरेशन विथ सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी. सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी रो अर्थ यूनिटरी फीचर्स एज वेल एज फेडरल फीचर्स. अर्थ कह गले कि भारतर संविधान रे एमिति किछिटा प्रोविजन्स अछि व्हिच आर यूनिटरी इन नेचर. यूनिटरी माने कोन? अर्थ कोन कि स्टेट राउ किछि हस्तक्षेप रहिबोनी. यूनियन जेतळ जहा कहइबो से कंट्रोल करि परिबो. को समय रे सेटा हुए? इमरजेंसी सिचुएशन रे. माइंड रे क्लियर हे गेला मोर. येट जो समय रे इमरजेंसी नाही, वर्तमान जेमिति नाही, सेही समय रे नॉर्मल फेडरल जेमिति चले कथा चालुची. नंबर 1 कहेटा बुझिया पय ट्राई करो. काहे कहू जे स्टूडेंट्स ए गोटे टॉपिक रो दि तीनटा जिंस तमे बुझिबो. गोटे हला इमरजेंसी प्रोविजन जानि गला. यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी. तापर स्टेटमेंट कांसेप्ट तो पर कथा. सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी रो अर्थ कोन? गोटे एग्जांपल देली इमरजेंसी. आ गोटे एग्जांपल देई परिबो को? ना इलेक्शन सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी को समय रे सेंट्रल पावर थाए ता पाखरे जोटा कि स्टेट पाखरे नथिबो. इमरजेंसी गोटे हमें जानिले. हा गोटे को हां बट सेटा तो फेडरलिज्म ऊपर आसला, नॉट सेंट्रलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक. रेसिडुअरी पावर यस और नो. सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी यस और नो. गोटे हला यूनियन लिस्ट, केवल यूनियन गवर्नमेंट लॉ बनेबो. स्टेट लॉ बनेबो. किंतु व्हाट अबाउट रेसिडुअरी पावर जो जिनसा मेंशन नाही, नॉट आल्सो इन द कंकरेंट लिस्ट, सेटा सेंटर डोमेन आसुची. सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी. सेकंड थर्ड पॉइंट कंकरेंट लिस्ट. कंकरेंट लिस्ट रो पावर रे उभय लॉ बनै परिबे, बट द पार्लियामेंटरी लॉ विल ऑलवेज प्रिवेल ओवर द स्टेट लॉ. सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी. आर यू अंडरस्टैंडिंग कोन काहे की पचाला क्वेश्चन ता? सो हमें कोन जानले ए जो तीन चारटा पैरामीटर्स हमें बुझी गले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी. नाउ ऑप्शंस पढिबा टिके. अच्छा स्टेटमेंट उडा दे दीजिए एठी. अ सिंगल एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोविजंस ऑफ ऑल इंडिया सर्विस, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर. अच्छा से कोन पचारची? 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 and D होची ऑल. अच्छा D ऑल कहि छी ना. अ सिंगल एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन मु तुमको कहिली कि नाही स्टार्टिंग रे मु कहि छी. संविधान रो किछिटा प्रोविजन रिजिड, डिफिकल्ट टू अमेंड, बट किछि किछि प्रोविजन बहुत इजी, सिंपल मेजॉरिटी भी कोन हे परिबो अमेंडमेंट हमें करि परिबा. सो इट इज अ ब्लेंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एज वेल एज रिजिडिटी. किंतु संविधान गोटिए. करेक्ट स्टेटमेंट. करेक्ट स्टेटमेंट. प्रोविजन ऑफ ऑल इंडिया सर्विस हमर अछि कि नाही? ऑल इंडिया सर्विस is again मु एटा मिस कर गेली तो मन को डिस्कशन समय रे, बट ऑल इंडिया सर्विस इज अ सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी और नॉट? यस और नो. ऑल इंडिया सर्विस होची आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस. एमान को यूपीएससी रैंक लिस्ट बाहर करे, अपॉइंटमेंट पाइबे डीओपीटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट काम करिवे स्टेट रे. आईएएस आईपीएस ऑफिसर से माने काम स्टेट रे करिवे. बाय डिफॉल्ट दे आर रेगुलेटेड बाय whom? सेंटर. वर्किंग फॉर द स्टेट. यस सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी. ये भी करेक्ट स्टेटमेंट. अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर. यस गवर्नर भी इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, व्हिच इज तमे कहि परिबो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट कहि परिबो. जेतरो चाहे अपॉइंटमेंट करि परिबे, रिमूव करि परिबे. यस और नो. व्हाई इट इज अ सेंट्रलाइज्ड? बिकॉज अल्टीमेटली even if it is a federalism, even if the state legislature assembly has passed the law, the ultimate power lies with the governor whether to clear the law or not. हेई पारे गवर्नर एमती भी अछि जे से प्रेसिडेंट को पाक पाई भी रिजर्व करि रखि परिबे. तो सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी हैला. सो ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट स्टेटमेंट. सो आंसर कोन हो स्टूडेंट्स? डी.
बुझी पारछो समस्ते किछि डाउट अछि पचार किछि डाउट तमरो डाउट तुम नाम भूली गली हिमांशु डाउट आसिफ किछि डाउट क्लियर ऑनलाइन जो मन अछो बुझी पारछो समस्ते देखो टेक्निक बुझ ओके मोर पर्पस या नुह जे आंसर कहबा मु एटे आसी तुमको टेक्निक गुडा सिखिया पे नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हिच ऑफ कौन क्वेश्चन ओके क्लियर ठीक अछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मे बी ड्रॉबैक्स ऑफ डेमोक्रेसी ड्रॉबैक्स ऑफ डेमोक्रेसी अर्थ आमे समस्त जानि छे जे जो देश रे लोकतंत्र थाए डेमोक्रेसी थाए सेठी कोन कोन बेनिफिट हुए बट सी पचार छि कोन बेनिफिट नुह बुझिबा टिके लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी व्हिच कुड लीड टू इनस्टेबिलिटी डेमोक्रेसी रे लोकतंत्र रे कोन हुए लीडर कीप चेंजिंग केते वर्ष रे चेंज हबो कोन हबो सेटा लिखा है नै किछि इट्स अ वेरी वेग स्टेटमेंट लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी व्हिच कुड लीड टू इनस्टेबिलिटी ऑब्वियसली सत कथा ये सर ना भूल एटा लीडर जदि चेंज हेबे से 5 वर्ष रे चेंज हुंतु कि गोटे वर्ष रे चेंज हुंतु चेंज हेले कोन हबो इनस्टेबिलिटी हबो एबे गोटे गवर्नमेंट जेतले आसुची एबे फॉर एग्जांपल हमरो प्राइम मिनिस्टर जे करंट प्राइम मिनिस्टर अछन 15 वर्ष वर्तमान कंटिन्यू करूचंती आउ रिसेंटली ओडिसा रे जस्ट सरकार एबे फॉर्मेशन हेइची तो गवर्नमेंट किसी डेवलपमेंट करबा पई इट टेक्स टाइम तुम्हें कहबन जे नै गोटे मासरे सब किसी चेंजेस हे जबे नॉट पॉसिबल बट जदि फ्रीक्वेंटली चेंजेस हबो जोडा कि तुम्हें कहि परिबो जे वाजपेयी को समय रे हेतिला 90s समय रे बेसिकली फ्रीक्वेंटली गवर्नमेंट चेंज हेतिला सो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट ओके जदि एटा करेक्ट स्टेटमेंट हमें मेथड नंबर 2 अप्लाई करिबा एलिमिनेट कर दबा बी हे परिबोनी आंसर हे परिबो की नै एटा को बुझिया पे ट्राई करो स्टूडेंट्स टिके मु एलिमिनेट किमिति करछि पूर्व गुडा एलिमिनेशन रे ए एलिमिनेट टिके डिफरेंट मु जानिली जे एक नंबर क्वेश्चन स्टेटमेंट होछि करेक्ट अर्थ एक नंबर टा जोठी जोठी थिबो सेटा करेक्ट हबार पॉसिबिलिटीज अछि जोटा नाही करेक्ट हबार पॉसिबिलिटीज नाही कोटा नाही 3 नाही 3 नंबर नाही ओके नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड democracy may lead to corruption as it is based on electoral competition yes or no democracy may lead to corruption एटा कहून जे corruption निहाती ही हबो it may lead to corruption yes of course may lead to corruption democracy increases the chances of rash and irresponsible decision making is it so no रादर डेमोक्रेसी रे उल्टा हुए कौन हुए अकाउंटेबिलिटी अधिक हबो डेमोक्रेसी रे एकछत्रवादी शासन हुए नि मोनार्की रे एकछत्रवादी शासन होछि डेमोक्रेसी रे पीपल आर से माने दे आर आंसरेबल टू द पीपल लोक समस्त देखु छन सो स्टेटमेंट नंबर 3 भूल हे जीवो एंड बाय डिफॉल्ट तुम कहि परिबो स्टेटमेंट नंबर 2 इज द करेक्ट सो आंसर कोन हबो 1 and 2 ओनली ओके क्लियर ऑनलाइन जो माने छो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फंडामेंटल ड्यूटी ऊपर पचार ओके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट ओके विथ रिगार्ड टू फंडामेंटल ड्यूटीज तो मो माइंड कोठी की जीवा दरकार फंडामेंटल ड्यूटीज माने कोठी की जीवा माइंड ओ पार्ट को जीवो वो पार्ट 4 ए आर्टिकल 51 ए गोटे ही आर्टिकल अछि ओके चलो नाउ कोन पचार बुझिया पे ट्राई करो पचारछि कि दे कैन बी यूज्ड बाय द कोर्ट्स टू डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉ दे कैन बी एनफोर्स्ड बाय द पार्लियामेंट थ्रू लेजिस्लेशंस नाउ एठी कांसेप्ट कोन बुझिया पे ट्राई करो now there is always debate and discussion between the fundamental rights and fundamental duties आमे अधिकार को सब बेले डिमांड करूचे बट केबे भी आमे कहूने कि गवर्नमेंट आम ऊपर केबे फोर्स करनी आज पर्यंत कि तुम्हें फंडामेंटल ड्यूटी भी यू आर बाउंड टू डू
केबे हम कहि छी ना बट आमे हक र सहित फंडामेंटल राइट्स गुडा को आमे सब बेले मागुचे जदी न होची देन वी कैन सीक under the article 32 Supreme Court and 226 to High Court. But what about fundamental duties? Now fundamental duties, they can be used by courts to determine the constitutionality of law. Yes, yes, it is true. मौलिक दायित्व जोटा थाए जेतबेले गोटे लॉ तैयारी हुए ओके जेतबेले गोटे लॉ तैयारी हुए कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द लॉ अर्थ लॉ जेतबेले तैयारी हुए मैक्सिमम समय रे हमें एया जानी छे कि लॉ अंडर आर्टिकल 13 of the Indian Constitution try to understand article 13 कौन कहूची any law that contradicts with the fundamental rights shall be null and void and shall be unconstitutional. कौन कहूची article 13 talks about the law specifically article 13 clause number 2 but मैं इतने details को जाऊनी. It says that any law that contradicts with the fundamental rights or any law which infringes the fundamental rights shall be made null and void and unconstitutional. तो पार्लियामेंट रो क्लियर कट इंस्ट्रक्शन अछि जुडिशियरी चाहिए कोनोसे भी जदी लॉ आ सेटा फंडामेंटल राइट को व्याघात माने इन्फ्रिंज करूची ताले सेटा अनकन्स्टिट्यूशनल हेइ जिवो किंतु क्वेश्चन कोन पचारची बुझिया पे ट्राई करी एठी पचारुची कोर्स टू डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉ एठी हमको या भी बुझिया पड़िबो कि जदी फंडामेंटल राइट्स जदी गोटे लॉ तैयारी हला और सही लॉ रे देयर इज अ स्कोप दैट फंडामेंटल राइट्स को एक्सरसाइज करबा पई सेठी स्कोप ही नाही बुझे पे ट्राई करो हमर जहां भी फंडामेंटल राइट्स अछि इमिति गोटे लॉ तैयारी हे के आसुची और सेठी हमें फंडामेंटल राइट को एक्सरसाइज कर ही पारिबानी देन द कोर्ट कैन रिव्यू फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी केते दूर एटा लॉ ठीक हबो प्रथम कॉन्सेप्ट सेकंड they can be enforced by the parliament through legislations. Try to understand aji porjonto fundamental right is not enforced but can it be enforced statement se hi pacharchi tuमको can it be enforced yes it can be enforced jodi parliament kali gote law nei ki asibo se kahibo je जो प्रकार तुमे fundamental duties rights गुडा को तुमे हक रो सहित कहूचो सेही हिसाब रे तुमे जदी fundamental duty perform न करिवो you will be deprived of some services they can bring a law एतरे किछि प्रॉब्लम नाही. So both the statements are correct statements. Answer is C, both 1 and 2. Clear? All of you? Online jo mane acho, is it clear to all of you? Okay. Chalo. Next, students. Which of the following statements is or are correct regarding fundamental right? So my mind ko uthi jibo my mind goes to part 3 of the Indian Constitution and specifically from article 12 to 32 yes or no or 35 and specifically from 14 to 32 correct because actually जो fundamental right कोड लिखा है 14 ରୁ 32 जाय लिखा है बाकी 12 ରୁ 35 होची total fundamental rights रो तुम्हारा part 3 of the Indian Constitution कोन पचारची मते पचारची कि correct answer कोडा चूज करो okay so मु चेक करिवि कि कोन मु एथरे एलिमिनेशन टेक्निक यूज करि परिबि yes there is a possibilities because एटी how many पचारने एटी only which of the above पचारची मते so let us try to understand कि eliminate हमें टेक्निक एटी यूज करि परिबा कि न करि परिबा now they are sacrosanct in nature and cannot be amended go wrong कोन कोडा भूल एथरे को सैक्रोसैंट रो अर्थ होची सर्वे सर्वा बुझी परछ सर्वे सर्वा अर्थ ताकू के छु ही पारिबोनी एंड कैन नॉट बी अमेंडेड एटा भूल ना ठीक भूल केमिन जानलो भूल नाउ दैट ब्रिंग्स टू मी अ क्वेश्चन कैन फंडामेंटल राइट्स अमेंडेड yes where is the proof proof क्या है
Right to privacy. Go. Go. ନା ନା ମୁଁ ପ୍ରୁଫ କହୁଛି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ ବୋଲି କହିଲା କିଏ କଣ ଅଛି ଗୋଲକନାଥ କେସରେ where is the proof Yeshwananda Bharati case okay go देखिए गोटे स्टेटमेंट रे दिस इट इज इटसेल्फ अ टॉपिक ये गोटे स्टेटमेंट ही गोटे टॉपिक तुम पॉलिटी रो टॉपिक रो ना कौन amendability of fundamental rights amendability of fundamental rights so the question comes whether fundamental rights can be amended or not ये क्वेश्चन आसिला कोन पाई केबे आसिला कोठु आसिला हां तापर कोन हला Now, for the first time in Indian history, the question on amendability of the fundamental rights comes in the year 1951 by the first Constitutional Amendment Act of 1951. First time. Now, this topic, amendability of the fundamental rights, is a typical tussle. It's a typical tussle or battle between judiciary and legislature. ମୁଁ तुमको गोटे जिनस तुमको आगु क्लियर करछि कि पार्लियामेंट इज सोवरेन judiciary is independent judiciary has the power to make any law by the parliament as null and void any law judiciary पाखरे सेतिक पावर अछि and the parliament has the power to nullify any judgment of the Supreme Court also by making a new law गाइड बुझी परछ सो पार्लियामेंट गोटे लॉ बनेला फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एई फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे बहुत सारा चेंजेस करा हला ता भीतर फंडामेंटल राइट रो किछि चेंजेस भी होना जाय छी now this first constitutional amendment act is challenged in the constitution in the Supreme Court by which case no no oh. Online चंपकम दुराई शंकरी प्रसाद वर्सेस नो यूनियन ऑफ इंडिया 1951 नॉर्मली लॉ को चैलेंज कोठी हुए एई भली हुए
So this law is challenged where? Sankar Prasad versus Union of India 1951. ओके फर्स्ट टाइम पाई या पूर्वरु केबे डिस्कशन ही नथला जे फंडामेंटल राइट रा अमेंडमेंट ऊपर डिस्कशन ही नथला जेहेतु डिस्कशन हेई नथिला पार्लियामेंट को लागिला जे हम अमेंडमेंट कर दे परिबो बिकॉज़ देयर वाज नो डिस्कशन अर्लियर तो क्लैरिटी ही नाही किछि सो फर्स्ट टाइम पाई जेतळे शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 51 रा केस फाइल हैला सुप्रीम कोर्ट से डिस्कशन स्टार्ट करले कि कैन फंडामेंटल राइट बी अमेंडेड देयर सुप्रीम कोर्ट केम टू अ कंक्लूजन सुप्रीम कोर्ट कहिले कि द पार्लियामेंट जजमेंट कौन थिला सुनो द पार्लियामेंट हैज टू टाइप्स ऑफ पावर two types of power बुझी पारछो so what are the two types number 1 constituent legislative power number 2 ordinary legislative power जजमेंट कौन देला सुप्रीम कोर्ट से कहले कि पार्लियामेंट तुम पाखरे दुईटा पावर अछि गोटे होची कॉन्स्टिट्यूएंट लेजिस्लेटिव पावर आ गोटे होची ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर एंड सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट बाय यूजिंग कॉन्स्टिट्यूएंट लेजिस्लेटिव पावर you can amend any part of the constitution including fundamental rights, but by using ordinary legislative power you cannot amend constitution. Now one thing that can come in your mind, sir, why Supreme Court told constituent legislative power? Because the constituent assembly was going on during that time. So Supreme Court might have thought that it is the constituent assembly who created the constitution, therefore it has the power to amend the constitution. So parliament has not created the constitution. मु सही समय कथा कहूँ I am taking you back to 1951. सही समय पार्लियामेंट रो काम होची नॉर्मल लॉ तैयारी करबा संविधान तैयारी करबा काम पार्लियामेंट रे नथिला संविधान तैयारी करिवार पावर का पार थिला केवल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पाकर थिला जोटा कि से करू भी थिले. सो सुप्रीम कोर्ट माइट हैव थॉट दैट. बुझिपारछो तापरे कोन हला के कहबो गोलकनाथ रे कोन हेतिला कोन हबो गोलकनाथ रे कोन कहले सेटा छाड़ी दियो बट मोर कहयार माय क्वेश्चन इज दैट गोलकनाथ केस रे कौन कहा जाइतिला कि कैन फंडामेंटल राइट्स बी अमेंडेड और नॉट. So in the case of the Goloknath Ray, basically it has changed. Supreme Court has changed the entire interpretation of the constitution. Supreme Court कहले कि तुम्हें पार्लियामेंट चेंज कर परिबोनी. You do not have the power to change the constitution, not even fundamental rights. So गोलकनाथ रो सज्जन सिंह पर्यंत भी सेटा कंटिन्यू चलला. बुझि पारछो ओके बट पार्लियामेंट इज फ्यूरियस. पार्लियामेंट कहले हाउ कैन इट बी पॉसिबल. वी एज ए पार्लियामेंट इज सोवरेन इन नेचर. हमर जहा इच्छा में सेया लॉ बनी परियो. हाउ कैन यू लिमिट आवर पावर. So the first time in Keshwananda Bharati case, actually या पूर्वरु जो अमेंडमेंट आस्तिला या विषय मु कहिबि ब्रीफ रे केशवानंद भारती केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया स्टेट ऑफ केरला
1973 करेक्ट एठी कौन हैला स्टूडेंट्स सुप्रीम कोर्ट केम विथ द कांसेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर केम विथ द कांसेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एठी कोहा हैला कि the parliament can amend any part of the constitution subject to the basic structure cannot be amended subject to the basic structure cannot be amended अर्थ basic structure जो जो concept गुड़ा अच्छी ताकू छाड़ी दे कि बाकी जो जिनसो जे से जहां चाहिले से amend करि परिबे right now the question comes does fundamental right fall under basic structure huh? Can yes is it true yes even the blanket yes कहले एटा ठीक हो students there are two fundamental rights which comes under basic structure not all गोटे होचे article 14 another one is article 21 only two fundamental rights and also article 32 judicial review जोटा अछि ए तीनटा होची fundamental right जोटा basic structure under रे आसुची so the parliament cannot amend these basic structures बाकी fundamental right को amend करी हबो एगुडा को amend करी परिबा नाही now how far it is true further next question is it really true that article 14 21 and 32 cannot be amended sir आपन तो कहिले हेबे it cannot be amended पुनी अथर काई क्वेश्चन पचारछन्ती try to understand now there are two different types of legislature मु टिके आउट डेप्थ को जाउची so that you will understand one is positive legislature another one is a negative legislature तमरो माने बिल्कुल एटा तमरो पाठर ओपीएससी पे आवश्यक नाही बट एटा बुझिया बे मु तमु कहूचे further interpretation Supreme Court has said that article 14 21 32 cannot be made as a negative legislature अर्थ या कि if you want to enhance the power of 14 21 32 you can do that amendment रो अर्थ कोन addition subtraction or anything else any change so तुमे जदि एथरे किछि ऐड करूछो for greater good then it is valid then the amendment is valid मुकाटे बुझी परछो बट तुमे जदि यार पावर को लिमिट करिया पे अमेंडमेंट करूछो then it's not valid negative legislations by it will be treated as restriction to basic structure clear okay although मु तमरो क्लास रे पढैनी amendability of the constitution ये गोटे लॉन्ग चैप्टर गोटे क्लास पूरा लागिवो मु तुमको नोट्स भी दे देबी किसी जिंस मु जो समय पढैबी और बहुत सारे डिटेल्स अछि केते क्लॉज आर्टिकल 362 वर्सेस आर्टिकल 13 बहुत सारा जिंस अछि मु तुमको सेही समय रे बुझाई कि कहबी नाउ लेट अस कम टू कांसेप्ट वंस क्लियर हला माने बिल्कुल भी तुम्हारा आवश्यक नाही ये करबा सो दे आर सैक्रोसैंक्ट इन नेचर एंड कैन नॉट बी अमेंडेड इज इट अ करेक्ट स्टेटमेंट नो सो ये संपूर्ण भूल स्टेटमेंट हमको कोन फाइंड आउट करिया पड़िबो करेक्ट फाइंड आउट करिया पड़िबो माने स्टेटमेंट ऑफ 1 कैन नॉट बी द आंसर लेट अस अंडरस्टैंड एक नंबर जोटी जोटी अछि सेटा आंसर हबनी ये हबनी आंसर आउ ये भी हबनी आंसर ओके फर्दर मो माइंड कोठी चलीबो कि मु देखिली कि बी आउ सी भितरे 2 नंबरटा कॉमन अछि माने दुईटा निहाती रूपे ठीक सो वर्तमान मोर प्रश्न होची जदी मु 3 नंबर स्टेटमेंट मु जानि एटा ठीक ना भूल देन बाय डिफॉल्ट मु कोन करिवे जानि देई परिवे कि कोटा करेक्ट हबो नाउ स्टेटमेंट नंबर 3 पचारची कि दे ऑपरेट ए चेक्स ऑन द टेरेनी ऑफ बोथ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर कांसेप्ट कोन बुझो टेरेनी माने अर्थ टेरेनी अर्थ कोन एक छत्र बुझी परछो टेरेनी रो अर्थ होचे एक छत्र सो दे ऑपरेट ए चेक्स ऑन द टेरेनी ऑफ बोथ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑनलाइन जो माने अछो किसी डाउट अछि केस वन हां ठीक अछि यस और नो इट बेसिकली ये जो अमेंडेबिलिटी अछि एक छत्र शासन रे कोन होबे
किए लिमिटेशन किबा रेस्ट्रिक्शंस लगै परिबो सो आमे एठी कोन जानले स्टूडेंट्स माने 3 नंबर स्टेटमेंट टा भी करेक्ट स्टेटमेंट सो आंसर वुड बी C 2 and 3 स्टेटमेंट और 2 टा भी पढ़ दवा they are available against the actions of both state and private individuals is it really true private individuals ऊपर भी अछि कि अछि yes they are available against the actions of both state and private individuals अच्छी ओके ओके यस अच्छी कोटा कुह जदि अच्छी आर्टिकल 17 18 कौन abolitions of titles I think ता माने तुम्हें बुझी ना जिनसटा they are available against the actions of both state and private individual अर्थ कौन ना ना स्टेटमेंट रो अर्थटा बुझ मीनिंग टा बुझ against the state and private individuals अर्थ फंडामेंटल राइट वायलेट हुए कार हम मानकर हुए किए करिवो सेटा पचारछि जदि स्टेट वायलेट करे हमें तो जानिछे हमर फंडामेंटल राइट हेई परिबो एटा तो करेक्ट अछि बट जदि हमर गोटे इंडिविजुअल वायलेट करिवो कौन ताहले तुम आर्टिकल 32 रे जाई परिबो सुप्रीम कोर्ट पाखकु नो not always so there are only two fundamental rights जोटा कि प्राइवेट रे अगेंस्ट रे भी हेई परिबो केवल दुईटा कौन कौन आर्टिकल 17 राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी जदि जने प्राइवेट इंडिविजुअल भी अछुआ प्रैक्टिस ना रे मु ताकू छुईमी नहीं then it is considered as violation of fundamental right and also article 15 clause 2 what is article 15 clause 2 prohibition of discrimination yes or no कौन 15 clause 2 कौन no that is article 15 clause 1 15 clause 2 कौन हाँ no one shall be denied access to public places तुम्हें भी जाइए पार्क रे बुलिवा पाए तुमको किए प्राइवेट इंडिविजुअल कहला जे तोरो तुमरो हक नाही एठी आसिया पाए देन दैट इज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 15 क्लॉज 2 बुझी परछो केवल दीटा ही फंडामेंटल राइट अछि स्टेट 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 जदि वायलेट करूची आ तुमे कह सर जदि प्राइवेट कोनोसी लोक जदि फोर्सफुली काहा को काम करूची देन सेटा फंडामेंटल राइट रे आसीबोनी सेटा लेबर लॉ अंडर रे आसीबो हां हां सेटा जे बॉन्डेड लेबर कथा मु कहूची जदि किए प्राइवेट इंडिविजुअल वायलेट करूची ताको देन सेटा आसीबो तुमरो लॉ रे आसीबो नॉट इन कॉन्स्टिट्यूशन दे आर आल्सो पनिशेबल से माने इमति नुह जे से माने कोनोसी त्राही पाइबे इट इज पनिशेबल बट नॉट अंडर फंडामेंटल राइट बट अंडर द डिफरेंट लेबर लॉस क्लियर बुझी होची चलो हाँ 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 सी आर्टिकल 18 टा काहे कि नुह बिकॉज देयर इज आज पर्यंत तारा पनिशमेंट किसी प्रेस्क्राइब हेइनी पार्लियामेंट द्वारा always remember my dear कि fundamental rights are subject to enforceable the meaning of enforcement means it cannot be self started it needs a law to be implemented से फंडामेंटल राइट को इंप्लीमेंट करबा पई गोटे लॉ दरकार सो आर्टिकल 18 पई आज पर्यंत स्पेसिफिक किछि लॉ आसे ठीक है चलो नेक्स्ट which of the following statements are correct किसी क्वेश्चन एनी क्वेश्चन ओके which of the following is or are correct चलो ठीक अछि कोन कहि छि से रेफरेंस टू राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अंडर आर्टिकल 32 माने मो माइंड रे जाउ छि कि प्रोबेबली ये मते कहू छि सुप्रीम कोर्ट विषय रे ये मते कहू छि फंडामेंटल राइट विषय रे
आउ जो विभिन्न प्रकार जो रीट्स अच्छी कौन कौन रीट्स अच्छी हिबियस कॉर्पस मैंडामस प्रोहिबिशन सर्सियोरारी सिरियोरारी जहाँ भी कह स्पेलिंग बस ठीक करिवो आ गोटे खुआ वारंट पांचटा रीट्स अच्छी चलो मो माइंड फ्रेम हेगला कि प्रोबेबली क्वेश्चन टा या ऊपर ही पड़थिबो देखिबा it is invoked to determine the constitutionality of any executive order or legislations if it indirectly infringes any of the fundamental rights. Now question seems lengthy जेतोले दी तीनटा सेंटेंसेस पळे आसे तुमको फील हुए कौन एते गुड़ा पढ़िया पड़छि मीनिंग बुझिया पड़छि और फ्रैंकली स्पीकिंग टिके धैर्य नै कि पढ़िबो क्वेश्चन टाको अब बुझिबो लेट इट टेक सम 1 मिनिट एक्स्ट्रा नो प्रॉब्लम बट से गोटे 2 मिनिट एक्स्ट्रा तुमरो आंसर टाको ठीक करे दबो जोटा कि प्रोबेबली अलगा पिला छाड़ देथिबे से माइंडसेट रे एटा लेंथी क्वेश्चन सो इट इज इन्वोक्ड टू डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ एनी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और legislations if it directly infringes any fundamental rights. Yes or no? अर्थ कौन आगे अर्थटा कह मते कौन अर्थ ये स्टेटमेंट ऑफ मीनिंग टा कौन मते बुझा कौन बुझिलो ओडिया मीडियम ना सॉरी जदि यह सीधा सड़क कौन मौलिक अधिकार को उल्लंघन करे तेबे यार सांविधानिकता निर्णय करने यह व्यवहार करा जाए अर्थ कि जदि गवर्नमेंट कौन से लॉ नहीं आसे किंबा जदि पार्लियामेंट कौन से लॉ नहीं आसे ताहले आउ से लॉ टा जदि फंडामेंटल राइट को इन्फ्लुएंस करे ताहले कौन हम आर्टिकल 32 अंडर रे आमे जस्टिस पे सीक करि परिबा so it basically it is nothing but the interpretation of article 13 clause 2 or simply article 13 article 13 तो यह कहूँ what is a law which is made by the parliament or an order and cannot be held against or any infringement to the fundamental right so this statement is correct statement मते कौन फाइंड आउट करिया पड़िबो मते करेक्ट फाइंड आउट करिया पड़िबो माने एक जोथरे थिबो सेगुड़ा ठीक हम बाकी जदि एक बिना जदि किसी अच्छी ताले सेटा भूल हम एलिमिनेशन आम एप्लाई करबा ताले मु कोटा एलिमिनेट करियो स्टूडेंट्स बी टा को मु एलिमिनेट कर देली बी टा को मु एलिमिनेट कर देली ओके नाउ लेट अस अंडरस्टैंड काहे ना 3 ओनली केबे हेई परिबन एक तो आंसर हबो ही हबो सेकंड देखो द सुप्रीम कोर्ट हैज ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन इन केस ऑफ द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एटा तो माने इमिति रे जाय कि तम मुहरे नै कि से मोहन रे कि रखि दैछ कि नै तमे चाखो एटा मिठा कि खटा तमे कुह कथाटा एटा कि आर्टिकल 32 आमे ऑलरेडी जानि छे कि इट इज अ पार्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रेमेडी दुई प्रकार रो गोटे होची सुप्रीम कोर्ट पाखकु तमे डायरेक्ट जाई परिबो आ गोटे होची अंडर आर्टिकल 226 यू कैन सीक जस्टिस टू हाई कोर्ट नो हां हां 200 226 राइट हम भूल कहले हां एसबू जिन भूल हम नहीं यहाँ ऑटोमेटिक सब फिट होगी अच्छी जो फंडामेंटल राइट आस ऑटोमेटिक माइंड सेट हो सो 226 एंड 32 सुप्रीम कोर्ट ओके नाउ द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स कि यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट जोटा कि अलग कौन वायलेशन हुए नहीं पॉसिबल देयर इज नो वे डायरेक्टली गोइंग टू द सुप्रीम कोर्ट अदर देन वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स पीआईएल कथा तुम छाड़ दियो प्रोसेस कौन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रे फाइल हबो देन हाई कोर्ट जीवो देन सुप्रीम कोर्ट को जीवो बट फंडामेंटल राइट जदि वायलेट होउची डायरेक्टली तमे सुप्रीम कोर्ट पाखु जाई परिबो बहुत सारा केसेस अछि जो रणबीर अलाहाबादियां केस हला तांको ऊपर बहुत जण बहुत प्रकार किसी आक्षेप कले सीए फंडामेंटल राइट वायलेशन पाई सी जाइथिले सुप्रीम कोर्ट जाइथिले सिक करिया पे पूर्वर थिला फॉर एग्जांपल तांको ना कोन तमरो नेशनल क्रॉस जेथिले के कौन क्रॉस ना विंक ना सी जने साउथ इंडियन एक्ट्रेस जने थिले नेशनल विंक ना नेशनल क्रॉस तुमको जଣା थिबो ना ना रश्मिका नो रश्मिका आउ जने थिले जे की थिले एन एनीवे छाड़ पोज दबो नले एते इंपोर्टेंट नो
against individual jai haboni, it cannot be. The Supreme Court has original and exclusive jurisdiction in case of enforcement of fundamental rights. Supreme Court has original jurisdiction, एटी स्टेटमेंट को बाइफरगेट करा जायछि, and exclusive jurisdiction in case of enforcement. No, not exclusive jurisdiction. Original jurisdiction is correct, try to understand, but से कौन कहला कि and exclusive jurisdiction in case of enforcement of the fundamental rights. अर्थ केवल सुप्रीम कोर्ट ही ताको एनफोर्स करि परिबो, एटा करेक्ट हो. सो एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन हबनी. व्हाई? बिकॉज हाई कोर्ट पाखरे भी अछि एनफोर्स करिवा पई, सुप्रीम कोर्ट पाखकु भी अछि एनफोर्स करिवा पई. बुझि जदि न पारछ म रिपीट करबी. हां ना मु कहि दोछि सेटा 32 तो 8 लिखा हेछि, पर जदि हम स्टेटमेंट को पढिबा से कहिछि स्टेटमेंट बुझो एई पार्ट तमे बुझि गलो. सुप्रीम कोर्ट has original jurisdiction, एटा करेक्ट. jurisdiction of the supreme court रो विभिन्न प्रकार अछि. गोटे होछि ओरिजिनल jurisdiction, आ गोटे होछि अपीलेट jurisdiction, आ गोटे होछि एडवाइजरी jurisdiction. ओरिजिनल jurisdiction भितर भी विभिन्न प्रकार टाइप अछि. ता भितर गोटे टाइप होछि रीट jurisdiction, आ रीट jurisdiction होछि comes under article 32. okay, so article 32 and supreme court original jurisdiction is correct. सुप्रीम कोर्ट रो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इज करेक्ट. किंतु एडी जो एंड देकी स्टेटमेंट देला एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन इन केस ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट, नॉट इन केस ऑफ आर्टिकल 32 ऑफ फंडामेंटल राइट्स. एठी कोन कहला एनफोर्समेंट ऑफ ऑल फंडामेंटल राइट्स. सो दैट इज द रीजन व्हाई एटा ठीक हबोनी. एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन इन केस ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट जदि अंडर आर्टिकल 32 लिखि थांदा ताले संपूर्ण स्टेटमेंटा करेक्ट हे थांदा. जेहेतु ये 32 रा मेंशन करा हेनी, सेथिपाई केवल एटा तुमरा हाई कोर्ट रे भी अवेलेबल अछि, सुप्रीम कोर्ट रे भी अवेलेबल अछि. से गोटिए शब्द पई हां क्वेश्चन तो अंडर आर्टिकल 32 अछि. मना करे मु तो सेटा बुझौछि, सेथिपाई स्टार्टिंग रे मु भी टिके स्किप हे गेला मोथु. क्वेश्चन रे अंडर आर्टिकल 32 अछि, किंतु ए स्टेटमेंटा पढा भला हमरे. एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन इन केस ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एक्सक्लूसिव अर्थ केवल सुप्रीम कोर्ट ही करि परिबो, अलगा की करि परिबेनी. बुझि परछो? केवल मु जानि छै इट मे साउंड लिटिल कंफ्यूजिंग, बट तुमे स्टेटमेंट को बुझिया पे ट्राई करो. एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ओवर एनफोर्समेंट ऑफ ऑल द फंडामेंटल राइट्स, व्हिच इज नॉट ट्रू, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट पाखरे अछि अंडर आर्टिकल 32 एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट, अंडर आर्टिकल 226 एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट. सो जो एक्सक्लूसिव वर्ड टा लगैला एटा ठीक हबनी, जेहेतु से अंडर आर्टिकल 32 एटी मेंशन नाही. एडी से सब फंडामेंटल राइट विषय रे कहूची. से गोटे छोटो जिंस पई स्टेटमेंट नंबर 2 टा कोन हबो हमर एटा भूल हेइ छिवो. सो राइट आंसर कोन हबो स्टूडेंट्स? सी 1 and 3. ओके, किसी कंफ्यूजन को नै भी डाउट अछि? बुझि पालो सती क्लियर है ना? मुझे हेतु फ्लोर रे पळेली, मो द्वारा भी स्किप हे गेला, बट आई होप आई हैव रेक्टिफाइड इट. नेक्स्ट क्वेश्चन एटा अच्छा ये भी गोटे इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स. यस ऑनलाइन जो माने अच्छा बुझि पालो जो हमें हाँ हाँ ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड फॉल अंडर the definition of state under article 12 of the constitution. Definition of state under article 12 of the constitution. Definition of state ro arth iti basically mo mind jauchi, it is talking about part 3 FR जोटा कि 12 ରୁ 35 हमर फंडामेंटल राइट्स अछि. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नीति आयोग आरबीआई, कोटा डेफिनेशन ऑफ स्टेट अंडर आसीबो. सब गुडा काहे की अच्छा एटे इन प्रोबेबली जो माने जानि न, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कपल ऑफ थिंग्स. आर्टिकल 12 of Indian Constitution, it defines
state. Defines the state. Now students, जो माने बिगिनर अच्छो आमे समस्ते spoken way रे we always use a word called as government, correct? कि गवर्नमेंट या कला, गवर्नमेंट से या कला, गवर्नमेंट मतलब मोर अधिकार देलानी मते, गवर्नमेंट मते जिनसटा ये कर देछि, आमे सब बेले गवर्नमेंट बोली कहू, बट संविधान रे कोठी भी गवर्नमेंट शब्दर यूज करा हे नाही। आमे जो जिनस गवर्नमेंट बोली कहू, it is not government, it is known as state. Sir, ताले state रो अर्थ कोन? Try to understand my dear. State has two meanings. One, geographical meaning of state. Second, political meaning of state. State रो दुईटा क्लासिफिकेशन तमे कहि परिबो। जियोग्राफिकल मीनिंग रो अर्थ जेमते ओडिसा, आंध्र प्रदेश ये गोटे जियोग्राफी रहिला, याकू आमे गोटे राज्य बोली कहू। But political meaning of state means it refers to an authority. Authority. What authority? Legitimate authority. Legitimate authority. What is the meaning by legitimacy or legitimate ro artho kono? Legal. What do you mean by legal? Approved by people. So तुम्हें जो गवर्नमेंट कहूच, it is approved by people, that's why it is legal, it is legitimate and it is authority. Okay, so polity रे सबले मन रख state रो अर्थ होची authority. सेथि पई आमे जेतले पॉलिटिकल साइंस रे पढू, इंडिया को भी स्टेट बोली कुहा जिवो, means not geographical meaning, it is political meaning of state. So government जो तो तमे कहूचो, that is nothing but state, जोटा कि आर्टिकल 12 रे डेफिनेशन दिया जाय छी। तो कोन लिखा है आर्टिकल 12 रे? What is a state? A state is an authority. Okay, so भारत रे तीनटा ही अथॉरिटी अछि, ता बाद किछ अथॉरिटी अछि कि हमरो? कोन कोन अथॉरिटी? एग्जीक्यूटिव itself is an authority, एग्जीक्यूटिव एवं ता भितरे जहा भी किछ रहिबो, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मिनिस्टर, डिपार्टमेंट एटसेट्रा, पुलिस विभाग सब किछि आ भितर रहउछि अथॉरिटी। ओके, नेक्स्ट होउछि लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट हो, स्टेट लेजिस्लेचर हो, ए सब जिंस का भितर स्टेट भितर आसीबो। माय क्वेश्चन टू यू, जुडिशियरी, कैन जुडिशियरी बी कॉल्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट? ओह, can judiciary be called under the definition of state? कहीं okay, now जेहेतु मु क्वेश्चन टा इंडिविजुअल पचार जे तमे इंडिविजुअल आंसर दलो, लेट मी गिव यू लिटिल कॉन्टेक्स्ट। डू यू नो कि आर्टिकल 12 को कोन पई फंडामेंटल राइट रे रखा हिची? पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो फर्स्ट आर्टिकल होची आर्टिकल 12, तापर आर्टिकल 13, देन आर्टिकल 14 जोटा एक्चुअल फंडामेंटल राइट स्टार्ट होची आर्टिकल 14 को। कोन पई? व्हाट इज द रीजन? रीजन कोन? रीजन आया fundamental rights are subject to violation by whom? State. Who is the state? Defined. This is the reason. Okay, now the state has violated your fundamental right. Where will you go? कोड जीव तमे को ए पढिला मे टिके पूर्व अंडर 32 and 226 you go to judiciary. What is principle of natural justice? You cannot be a judge of your own case. So in case executive violates fundamental right or legislature violates fundamental right, you go to judiciary against the executive or legislature, correct? But can you file a case against judiciary in judiciary?
that is against the principle of natural justice. So can judiciary be under the definition of state? Are you answer मु कहडा बुझी परछ खाली हवा हवा रे पढले हबनी माने सेतिकी क्लैरिटी दरकार तुम मानको. Now here is the clarity. Judiciary रो दीटा further wing अछि. गोटे होची तमरो justice wing आ गोटे होची तमरो basically administrative wing. I am a teacher. किबा एकेडमी रो मेन फोकस कोटा पढेबा. बट आमे जो पाठ पढौचे कोन मु डायरेक्टली आसी केटी पढे दे परिबे मते सपोर्ट किसी दरकार नै. स्टाफ रो सपोर्ट दरकार कि ठीक ठाक थिबो एसी चलथिबो एटमॉस्फियर ठीक थिबा दरकार. यस और नो. सो दैट इज एडमिनिस्ट्रेशंस. जने टीचर चाहले त एकुडिया से सब किछि पढे दे परिबोनी आ सी जदी सब काम करिवो तार एफिशिएंसी डाउन हे जिवो. सो जस्टिस विंग जोटा जस्टिस विंग रो अर्थ कि स्पेसिफिक जो जजेस माने बसे कि जोठी से माने एडजुडिकेट करंती जोठी जजमेंट दियंती it cannot be under the definition of state during the proceedings. But गोटे जज भी एडमिनिस्ट्रेशन काम रे भी इन्वॉल्व रुहंती सेही समय रे they can be subject to the definition of state. बहुत लक्ष्मीकांत रे एते डिटेल्स नाही तुम ए जो क्लैरिफिकेशन दरकार तुम मानको. क्लियर एना बुझियला. सो जुडिशियरी इज पार्शियली अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट. नाउ जेहेतु आमे फ्रैंकली स्पीकिंग एतिकी बुझिला परे मते का लागुनी जे जदी या ऊपर कोनोसी क्वेश्चन आसीबो तमे करि परिबोनी. इज इट पॉसिबल? मु तुमको एते डिटेल्स से मु बुझाई छी. सो दिल्ली मेट्रो डीएमआरसी हे गला आधार एटा सब किए तयारी करछि गवर्नमेंट तयारी करछि कि नै. सो दीज ऑल आर क्रिएटेड अंडर एग्जीक्यूटिव मींस अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट. आखि बुझी कि तमे मारिबो डी. Nah, political party has no obligation to the government. They form the government, but they are not part of the government. Okay, BJP has formed the government, but BJP cannot be an integral part of the government. Party alaga, government alaga. Question number 10. Which of the following Supreme Court cases is or are related to disputes conflicts between fundamental rights and DPSP? आयर कोहिलियो केस, गोलकनाथ, मेनका गांधी, मिनरवा वेल केस. गोलकनाथ एंड 2 and 4 कहीं बाकी गुड़ा कौन कोटा कौन होइतिला सेठी. देखो ए क्वेश्चन टा जानिया पड़िबो केस गुड़ा. ओके चलो आयर कोहिलियो केस रे कोन हितला को जुडिशियल रिव्यू. हाँ तमिलनाडु रिजर्वेशन एक्ट जतले आस्तिला 94 रे से समय इट वाज चैलेंज बेसिकली. आमर गोटे ब्लैक होल अच्छे मुझे पढ़े आई थिंक पढ़ी बोधे जो मैंने शुणी ना मे बी रिव्यू रिविजन करदेवी कौ दिन गोटे जे 9 शेड्यूल रे जो एक्ट आसीबो बाय रूल 9 शेड्यूल तैयारी ही एथि करा हेछि कि जुडिशियरी आकु रिव्यू करि परिबोनी. ठीक अछि. सो आमर प्रश्न आसिला कि जुडिशियल रिव्यू आमे को बेसिक स्ट्रक्चर बोली मान्यता देइछ आमे कोठी केशवानंद भारती केस रे आमे कहिले कि जुडिशियल रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर. सो सेही पॉइंट ऑफ व्यू रो जदि आमे कहिबा कि 9 शेड्यूल जुडिशियल रिव्यू रो पार्ट हेई परिबोनी ताले कॉन्ट्राडिक्ट होउची. सो आयर कहिलियो केस रे बेसिकली सेही जजमेंट दिया जायतिला 2007 रे ताकू रीवेरीफाई करा हेतिला कोहा जायतिला कि 9 शेड्यूल इज आल्सो सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर. मींस दिस हैज नथिंग टू डू विथ एफआर और डीपीएसपी. एक नंबर टाको आमे कोन करिबा काटी दबा ये भी हबने ये भी हबने. ओके नाउ गोलकनाथ केस 1967 मु टिके पूर्व तुम मानक सहित डिस्कशन करथिली. ओके फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड ता माने 2 नंबर स्टेटमेंटटा करेक्ट स्टेटमेंट. ओके सो 2 जोटी होची सेटा ठीक हबो 2 कोठी होची बी होची. दिस इज द राइट आंसर द रॉन्ग आंसर.
ठीक तो हाँ राइट आंसर। तो तुम्हें 3 और 4 न पढ़िले भी आराम से तुम्हें आंसर दे दी परियो। बट मु कहि दउची 3 नंबर मेनका गांधी केस कोन हेतला सेठी? हाँ हाँ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को एस्टाब्लिश करा हेतला आउ हाँ स्कोप बढ़ा हेतला। बेसिकली हमर आर्टिकल 21 रे कोन करा हेची कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी सब्जेक्ट टू प्रोसीजर एस्टाब्लिश बाय लॉ सेटा संविधान रे लिखा हेची। प्रोसीजर एस्टाब्लिश बाय लॉ रे कोन हुए कि सबुठ बड़ गोटे इंपोर्टेंट फैक्टर जोटा सेटा होची इंटेंशन ऑफ लॉ। लॉ कोन लिखा हेची अलगा से लॉ काहे तैयार होला से जो इंटेंशन को चेक हो नथला। But due process of law, a concept is coming from the American Constitution. So मेनका गांधी केस रे हमें वैलिडेट करले कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे आर्टिकल 21 अंडर रे भी इंक्लूड अछि व्हिच इज अ इनहेरेंट फंडामेंटल राइट तमे कहि परिबो। इट इज नॉट एक्सक्लूसिवली रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक अछि क्लियर? आ देखिबा गोटिटा कर दबा। ओके which of the following is or are feature of Indian secularism? Online किसी doubt? Any doubt? Okay. Now let us understand which of the following feature of the Indian secularism. Okay. Now mo mind कोठी की जीवो secularism जदी कहि छी मो माइंड से सर्च करिवो सेकुलरिज्म कोठी कोठी अछि। अच्छा सेकुलरिज्म अछि मोर प्रिएम्बल रे आ गोटे अछि सेकुलरिज्म माने रिलीजन ऊपर आसला कथा। ओके आ एटा आसीबो कोठी फंडामेंटल राइट रो रिलीजन जहा आर्टिकल अछि तार रिलेटेड आसीबो। मो माइंड सेट ही गला वर्तमान फर्दर सर्च करिवा कि रिलीजन इज अ पर्सनल मैटर and there is no interference by the state. Okay, religion is a personal matter and there is no interference by the state. No citizen can be denied entry into educational institution of the state on the grounds of religion or caste. Every religion denomination has the right to establish and maintain charitable institutions without any limitations. एटी भूल गुटा टिक आइडेंटिफाई करियो। स्टेटमेंट 1 रे एटा ठीक ना भूल? ठीक ना भूल? Religion is a personal matter and there is no interference by the state. Is it a correct statement or wrong statement? Go. Confused? So for this you have to understand the concept of secularism. Concept of secularism. Specifically question कहाँ पर अच्छी? Indian secularism. So Indian secularism versus Western. Do you know कोउ देश पृथ्वी रो सबुठु the most liberal country in the world? France. Obviously because ये जो liberty तुम्हें कहि परिबो जोटा तांकर रिवोल्यूशन गोटे स्टार्ट हेतिला सेटा फ्रेंच रिवोल्यूशन जोटा हमें फेमसली कहू वेस्टर्न सेकुलरिज्म। वेस्टर्न सेकुलरिज्म कौन को है? with respect to the religion is a personal matter. Okay, secularism रो अर्थ ही कि religion has to be personal. So here is also religion is personal. State रो in western state have no official religion. No official religion. भारत कौन ऑफिशियल रिलीजन अच्छी? पाकिस्तान कहूँ आम इस्लामिक स्टेट बोली कहूँ। तो से माने
देशटू अधिक रिलीजन को से फोकस करुछन्ते बट भारत तो सेमती किसी कहूनी भारत कहूँ वी आर सेक्युलर स्टेट आमर भारत रे भी देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन okay third number point state do not or does not acknowledge any religion state do not or state doesn't acknowledge any religion अर्थ कि तुम्हें तुम पर्सनल जहाँ करछो करो किंतु पब्लिक प्लेसेस रे स्टेट रिलेटेड आमठू किसी तुम हेल्प मागिबनी सो एठी स्टेट रो कोनोसी ऑफिशियल रिलीजन नाही ता सहित स्टेट भी कोनोसी काम रो इंटरफेयर करिवनी सो पर्सनल जो मैटर इट इज प्योरली पर्सनल 100% पर्सनल बट हियर इन इंडिया it acknowledges all religion बेसिकली तुम स्टेटमेंट होची दिस इज द पॉइंट भारत रे वी एक्नॉलेज ऑल रिलीजन बट इन वेस्टर्न दे डू नॉट एक्नॉलेज एनी रिलीजन नाउ एतिकी तुम जानिଛ सेक्युलरिज्म इज मोर देन सफिशिएंट या बाद तुमरा कौन सी कांसेप्ट दरकार ही नहीं सेक्युलरिज्म रो क्वेश्चन करिया पे क्वेश्चन सुना religion is a personal matter yes correct and there is no interference by the state wrong माने पूरा स्टेटमेंट रॉन्ग हैला तुम्हें जदि ये स्टेटमेंट जानी न सिंपल कॉमन सेंस अप्लाई कलो हमर श्री जगन्नाथ मंदिर गवर्नमेंट रो इंटरफेरेंस इन द सेंस पॉजिटिव इंटरफेरेंस रहउची कि नै नेगेटिव मु कहूनी पॉजिटिव इंटरफेरेंस रहउची कि नै किसी प्रोत्साहन करिबा गवर्नमेंट रो हमर श्री जगन्नाथ रंकर एडमिनिस्ट्रेशंस अछि गवर्नमेंट ऑफिसर्स माने अछंती कॉमन सेंस अप्लाई करो माने टेंपल सहित किसी ना किसी लिंक हेक अछि सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग हमको फाइंड आउट करिबा करेक्ट जदि एक नंबर स्टेटमेंट रॉन्ग हबो ताले व्हाट कैन नॉट बी द आंसर 1 एंड बी कैन नॉट बी द आंसर एलिमिनेशन टेक्निक बंचिला सी आउ डी सी डी भितरे कॉमन होची 2 तो मु 2 पढ़िया दरकार नै मु डायरेक्टली जेबी 3 को बिकॉज़ मु जानि छी 2 आउ 2 टा डेफिनेटली करेक्ट ही हेतिबो ऑप्शन आसला केवल 3 जदि करेक्ट ना भूल 3 कोन कहिछि एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन हैज द राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस विदाउट एनी लिमिटेशंस without any limitation is wrong every religious denomination has the right to establish से माने एस्टैब्लिश करि परिबे मंदिर मस्जिद चर्च जहा चाहिले से माने करि परिबे ताकू मेंटेन भी करि परिबे किंतु विदाउट एनी लिमिटेशन नो देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस so that makes the entire statement wrong so only C is the correct answer 2 okay online जो माने अछो any doubt okay आउ दु तीनटा खंडे क्वेश्चन करिबा 11 नंबर क्वेश्चन हला हमरो 12 नंबर क्वेश्चन आसो which of the following are the reasons for creating union territories in India which of the following are the reasons for creating union territories of India union territory कोन पय क्रिएट करा जाय cultural distinctives strategic importance interest of tribal people administrative considerations yes कोन है परियो लास्ट दिरा कन्फ्लिक्ट कल्चरल डिस्टिंक्टिव रो अर्थ होची प्रोबेबली एमती गोटे जगह अछि जोठी की कल्चर बिल्कुल अलग कंपेयर टू डिफरेंट गोटे एग्जांपल देबी आसाम रे गोटे जगह अछि बोडोलैंड बोले ऑल्दो आसाम इज द स्टेट बट बोडोलैंड को समाने डेडिकेटेडली ऑटोनोमस काउंसिल अंडर देई छथि बिकॉज़ तार कल्चर बिल्कुल भी डिफरेंट ओके नाउ व्हाट अबाउट द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कल्चरली कंप्लीटली डिफरेंट करेक्ट सो ए ठीक हम स्ट्रेटेजिकली भी इंपोर्टेंट अच्छे जम्मू एंड काश्मीर तुम्हें कह कि दिल्ली कह दीज आर
strategically importance अछि correct interest of tribal people again तुमे अंडमान एंड निकोबर भी कहि परिबो जदि legislations हबो problem हेई पारे यूनियन टेरिटरी हेले ओनली सेंटर ही कंट्रोल करिवो आउ administrative consideration अर्थ कि ताकू एडमिनिस्ट्रेशन करिया पे केते इज आउ केते डिफिकल्ट सेमिति दादर नगर हवेली सेठी किए गवर्नर नांती सेठी ओनली एडमिनिस्ट्रेटर अछंती जने आईएएस ऑफिसर सी ही हेड सो ऑल फोर ऑप्शंस आर करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग fall within the purview of freedom of speech and expression as guaranteed under article 19 fundamental right रा क्वेश्चंस आसीला एठी ओके कोन हमहु पचारछि करेक्ट कोटा चूज करो व्हिच वन इज द करेक्ट ऑनलाइन जो माने 11 नंबर क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन समस्त बुझिलो ठीक अछि नाउ स्टूडेंट्स फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर रे कोन आसु फ्रीडम टू साइलेंस यस मु कहितली तुम मानको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन it is not a one fundamental right, rather it is a set of fundamental rights. Speech and expression means to speak freely and express freely without any barrier, without any fear. It also means not to speak and not to express, which means freedom to silence. Correct. Theory of elimination. जदि एक correct तो माने एक जो थ्रे नाही सेटा आंसर हबोनी चारि आंसर हबोनी माने मु चारि को पढिबे न पढिबे सेटा पर कथा बट एबे दरकार नै राइट टू स्ट्राइक कोठी भी नाही एनीवे जदि तमे कंफ्यूजन बाकी ऑप्शन गुडा भी पढि दियो राइट टू टेलीकास्ट एटा तमे प्रोबेबली लक्ष्मीकांत जदि डिटेल से पढि दियो मु जानि नि सेटी मेंशन अछि नथिबो why because telecast means it is talking about the freedom of press now in the constituent assembly there was a debate that we should grant the fundamental right to press but during that time Dr. Ambedkar denied and said that it is not necessary to separate and give a dedicated fundamental right to press why because the editor of the press the chief editor of the press is a citizen of this country and all the fundamental rights are applicable to the editor and all the restrictions of the fundamental rights are also applicable to the editor so say point of view freedom of press automatically comes under it this is also correct 3 number correct hai gaya okay right to know about the government activities that brings to the concept of right to information RTI so RTI is an inclusive fundamental right exclusive and inclusive mu kahitili exclusive ro arth specifically lekha heichi like freedom of speech and expression lekha heichi but not a single thing is written so eita lekha haini these are intrusive fundamental rights jo jinso bilkul sato nuho seta hochi right to strike so kon pacharchi select the kon kahiche correct answer na करेक्ट आंसर होची हमर हां 2 and 3 1 तो नहीं ऑप्शन ना हियर इज अनदर इंटरेस्टिंग थिंग एरे अछि ओ नहीं नहीं वेट हमर 2 टा भूल हैला हां 2 टा भूल हैला सो सी हबनी 1 3 and 4 1 3 and 4 ए ओके नेक्स्ट Consider the following statements with reference to idea of liberalism. French तुम्हें कही परिबा plus preamble रे भी mention अछि liberalism related in the context of Indian Constitution. Indian liberalism gives primacy to right of the individual over the right of community. Reservation for SC/ST community in Indian constitutions are example of Indian liberalism. कौन भाबुछ Indian liberalism gives primacy to the right of the individuals over the right of the community. Is it correct? Is it correct? कौन पचारछि इज और आर करेक्ट पचारछि हमको
a tricky question. Try to understand. Indian liberalism gives primacy to the right of the individual over the right of the community. Okay, now age of statement, this statement is बहुत पिला जानी नथिबे probably. This statement indicates towards socialism. जेमिति तमे पढिलो कि वेस्टर्न सेकुलरिज्म वर्सेस इंडियन सेकुलरिज्म सोशियोलॉजी ऑप्शनल के जनकर अछि. Anyways, I think socialism इमता गोटे concept जोटा ऑप्शनल भी नय समस्त पय दरकार तमरो. So सही भली इंडियन सोशियोलिज्म एंड वेस्टर्न सोशियोलिज्म भी गोटे concept अछि. In Western socialism, they primarily focus more on individual liberty than the group liberty. But in India, we focus more on the societal liberty than the individual liberty. But we are not talking about the society. We are talking about the polity. Yes, in polity, it is clearly mentioned. Liberalism कोठी mention अछि मते कहिबो ए concept ता कोठी mention अछि को fundamental right रे. Article 21, right to life and personal liberty. Personal liberty. कोठी भी group liberty लिखा है जी. Personal liberty. So if you think about the philosophical aspect, the statement is correct. If you think about the sociological aspect, statement is correct. But we cannot go in the flow of the sociological aspect. आमको polity रो subject माने polity point of view देखिया पड़िबो. 21 रे लिखा है personal liberty. So statement number 1 कोन है जिवो भूल हे गेला. जदि statement number 1 भूल हबो ताले आखि बुझा तमे कोन करि परिबो एटा हबोनी ये भी हबोनी ये भी हबोनी. Only B is the right answer. And indeed तमे जदि पढिबो reservation for SC ST community in the constitution are an example of Indian liberalism. ठीक है twist करी पचारछि but in reality yes. Why liberalism रो अर्थ होछि कि जनकर values को protect करिवा जन को freedom दबा. So एठी SC ST मानन को reservation माध्यम रे तांकर values को preserve करा जाउछि तांकू protect करिवा पाई. Okay, so ये होछि concept सेथि में एटा करेक्ट हबो statement number 2. हां कोटा personal liberty अछि only and over the rights of the community. एटा कोठी भी एतिकी जाई ठीक अछि but over the rights of the community एटा कोड नाही. Rights of the community पे personal individual liberty versus जदि हमें rights of the community कहिबा ताले जदि एटा नथांदा जदि over the rights of the community नथांदा ताले करेक्ट हेतांदा. से कहूछि पर्सनल लिबर्टी ओवर द राइट्स ऑफ द कम्युनिटी गोटे लार्जर इंटरेस्ट पाई जदि हमें देखिबा ताहले तुम पर्सनल लिबर्टी विल प्रिवेल ऑलवेज. दैट इज अ कांसेप्ट जोटा कि भूल कांसेप्ट. गोटे जगह रे तुमे कहबो ट्राइबल कम्युनिटी डोमिनेटेड अछंती. ओके सेमानकर राइट को देखिबो ना तुमरो निजर राइट को देखिबो. तुमे कहबो जे मते रेस्ट्रिक्शन किछि दियो नै जेमति फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट रे इनर लाइन परमिट अछि एंट्री करिया पे भी तुमको परमिशन दरकार व्हिच इज अ वायलेशन ऑफ द लिबर्टी. बट सेठी प्राइमेसी काहा को दिया होजे राइट्स ऑफ द कम्युनिटी को दिया जाउछि. ऑलराइट नाउ लास्ट गोटे क्वेश्चन करिबा. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल वाज एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस, टू प्रोवाइड फ्री एंड लीगल एड टू पुअर, टू मिनिमाइज inequalities, income status, and to promote the development of Hindi language. Second page 1 and 2, 2 and 3, 1, 2 and 4, 1, 2, 3, 4. To secure opportunity for the healthy development of children. ठीक. To promote equal justice and to provide free and legal aid to poor. ठीक. 1 and 2. 1, 2 किसी mix है नहीं. ठीक correct. To minimize inequality 42nd and नथिला to promote the development of Hindi language is also not the part of 42nd. So एथिपाई this question is factual question. मन रखिया question मु तुमको I think जो 4th chapter class में गोटे जिंस कोन कहउतले फंडामेंटल राइट फैक्चुअली तुमको घोषिया पड़िबो टीपीएसपी को फैक्चुअल तुमको घोषिया पड़िबो. ओके आई थिंक व्यस्त हो गलन समस्त. सो ऑल्दो हमें 15 टा आज क्वेश्चन डिस्कशन करले बट कोन आज सिखिलो सेटा मु पचरे पे चाहूँ. What did you learn from today's class? What is the answer? सेटा सिखिलो
आंसर कोटा इंपोर्टेंट नुह बिलीव मी प्रिलिम्स रे जदि तुम अप्रोच करेक्ट अच्छी आंसर भी करेक्ट हो ओके आ जदि तुम अप्रोच वंस भूल हो गला 99% चांस अच्छी तुम भूल कर आंसर जदि बा ठीक कर टाइम बहुत कंज्यूम हम से सो फोकस ऑन राइट अप्रोच आंसर ऑटोमेटिकली हम ठीक ओके चलो आज थैंक यू एवरीवन फॉर द क्लास